Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter The Sun as a Natural Resource. Here is some warm-up questions. You can do it by yourself. Let's know about the sun as natural source of energy, importance of sun for the plants, use of solar energy, different seasons of India, sources of energy, renewable and non-renewable. Conservation of energy. So these are some topics we will discuss in this chapter. Here is sun, a natural source of energy. The sun is the nearest star from us. It is continuously emitting huge amount of heat and light. It appears big because it is much closer to us than any other star. The sun is the source of almost all energy on the earth. In fact, the sun is the main source of heat and light for all the plants. The sun is primary source of Earth's energy. The light and energy that comes directly from sun is called solar energy. So as you know the students, sun क्या होता है, एक स्टार है और वो हमारे पास दैट मीन्स अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, इसलिए वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और वो कॉन्टिन्यूसली बच्चा लाइट और हीट को एमिट करता है, ठीक है। और जो हमें सन से लाइट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। और सन हमारी अर्थ पे जो है एक सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा सोर्स है किसका बच्चा, एनर्जी का। ओके, sun useful for plants. Without the sun, plants cannot make the food they need to grow, reproduce and survive. Unlike animals, plants are autotrophs, meaning they prepare their own food. They use energy from light of the sun, water and gases from air to make glucose. This process of making food in plants is called photosynthesis. So बच्चे जो plants हैं वो विदाउट सन क्या करेंगे, अपना खाना नहीं बना पाएंगे और फिर ग्रोथ नहीं होगी तो वो मर जाएंगे। अब बच्चे उन्हें ग्रोथ करने के लिए, सरवाइव करने के लिए सनलाइट की नीड होती है। क्यों? हमारी तरह नहीं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीनिंग जो अपना खाना खुद बनाते हैं और आपके जो प्लांट्स हैं वो आपकी सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और कुछ गैसेस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और उनके खाना बनाने के प्रोसेस को बच्चा हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। Human beings and animals get solar energy indirectly by eating plants and plant products. और हमें जो है बच्चा सोलर एनर्जी जो मिलती है वो हम प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनकी हेल्प से मिलती है। Do you know? Solar energy can also be utilized in vehicles, for cars to trains and now even airplanes. तो बच्चे हम सोलर एनर्जी को अपने व्हीकल्स में भी यूज कर सकते हैं। Here is uses of solar energy. The sun is full of energy and solar energy comes from sunlight that reaches the earth. This means solar energy has been used by people to cook food, keep warm and to dry clothes. Today, it is also used to generate electricity. Solar energy is used today in number of ways. So बच्चे जो solar energy है वो हम बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए और खुद को वार्म रखने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए और इवन अब तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी सोलर एनर्जी की हेल्प लेते हैं। Here is solar cells convert light energy directly into electrical energy. Solar panels that are made of many solar cells are put on the roofs of home to collect sunlight and turn it into power. If you have seen big shiny panels on the roof of a house, that house is using solar energy. Solar energy can be used to power anything in your house and that needs electricity such as light bulbs and to run water pumps. So बच्चे क्या होता है, जो आपकी सोलर सेल्स होती हैं वो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और जो सोलर पैनल्स होते हैं उनमें बहुत सारी सोलर सेल्स होती हैं। आजकल लोग इसका यूज करते हैं, हम अपने घरों की छत पे क्या लगाते हैं, सोलर पैनल्स, और वो क्या करते हैं बच्चे उसको लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं और उससे हम अपने घर में कोई भी चीज जो है यूज कर सकते हैं। कौन सी चीजें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। ओके स्टूडेंट, solar cooker is a device heat water by using the heat energy of sunlight to take the salt away from seawater, to use sun rays for drying clothes, towels, as sunlight makes the water in the wet clothes evaporate, to use sun rays for drying clothes and towels as sunlight makes water in the wet clothes evaporate. It is used by plants for the process of photosynthesis. It is used for drying harvested grains to preserve them for a longer time. Solar energy also plays an important role in water cycle. So बच्चे these are something, जैसे हम क्या करते हैं, हम सोलर अपनी सन एनर्जी में हम अपने कपड़े सुखाते हैं, या फिर जो हमारा सोल्ट है जो हमारे सी वाटर में प्रेजेंट होता है वो किसकी हेल्प से जो है अलग अलग होता है, सॉल्ट एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सन।
सो बच्चे ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से करते हैं? सन एनर्जी की, या फिर आप बोल सकते हो सोलर एनर्जी की हेल्प से. ओके स्टूडेंट्स, look here is some pictures. Solar panels, solar cooker, solar heater. So these are the some things we used in our daily life from solar energy. Here is we have check and mate as we already read about these things, so you can do it by yourself. Now, seasons. The sun is an important factor that affects the weather. Weather is a different condition such as hot, cold, cloudy, rainy or windy in our surroundings. Weather keeps changing on a day-to-day basis and different at different types of the day. तो बच्चे आपका जो सन है वो आपकी वेदर को अफेक्ट करता है, और वो क्या होता है कि आपकी वेदर का जो अफेक्ट है वो सन का जो है बहुत ज्यादा रोल होता है. और हमारी वेदर जो है एक दिन में कई बार चेंज होती है, जैसे कभी ठंड, कभी गर्म, कभी धूप, कभी छांव. सो दिस इज द वेदर. When the weather conditions remain same for a long period of time, then it is called season. So बच्चे जब आपकी वेदर कंडीशन बहुत टाइम के लिए सेम होती है, दैट इज सीजन. सीजन आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द अर्थ चेंजिंग रिलेशनशिप टू द सन. और सीजन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ की जो रिलेशनशिप है सन के साथ वो चेंज होती है. The earth travels around the sun over a fixed circular path called an orbit once a year or every 365 days. So जो आपकी अर्थ है बच्चा वो आपके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है अराउंड द सन in a year. As the earth orbits the sun, the amount of sunlight reach location on the planet gets every day changed slightly. So बच्चे जो हमें सनलाइट मिलती है और जो हमारे सन की जो पोजीशन है हमारी अर्थ से वो एवरी डे बहुत स्लाइटली चेंज होती है. So that's why हमारे सीजन होते हैं. This change causes the season. और इस वजह से क्या होते हैं बच्चा? सीजन होते हैं. The main season in India are summer, monsoon, autumn, winter and spring. Human activities change due to the change in season. So बच्चे ये क्या है? हमारे मेन सीजन्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी चेंज होती है जैसे जैसे सीजन चेंज होता है. Here is summer. The summer season starts in the months of April and ends in June. We can experience hot winds during the summer season. The days are longer and night are shorter. So बच्चे आपका जो समर सीजन होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, जून में एंड हो जाता है, और हमें उस मिड में क्या होता है बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं एंड बहुत आपका जो दिन है वो बहुत बड़ा होता है और रात छोटी होती है. Drinking a lot of water, fresh juices and tender coconuts are good to beat the heat. और हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए और कोकोनट वाटर जो है बहुत ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं हीट को बीट करने में. Here is monsoon. The monsoon season starts from June and lasts till September. Most of the days are cloudy and rainy. It is of great help of the farmers. It also causes flood in many regions of India. We use umbrellas and raincoats to protect ourselves from rain. बच्चे जो आपका सीजन होता है मॉनसून, उसमें बारिश होती है और वो कब स्टार्ट होता है? जून में एंड होता है बच्चा सितंबर में. ओके, और ये वाला सीजन आपके फार्मर्स की बहुत हेल्प करता है. और इस सीजन में हम रेनकोट और अम्ब्रेलाज का यूज करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ डेज में क्या होता है? क्लाउडी होते हैं और रेनी होते हैं, और आपकी बहुत सारे रीजन्स में क्या होती है बच्चा? फ्लड आ जाती है. Here is autumn. Autumn begins in September and lasts till November. In early autumn, the weather is sunny, warm and bright. The trees shed their leaves during the season. So autumn जो सीजन होता है बच्चा वो सितंबर टू नवंबर होता है, और अर्ली autumn में क्या होता है? बहुत ज्यादा सनी, वार्म और ब्राइट डेज होते हैं. ओके, और इस सीजन में जो आपके ट्रीज हैं वो उनकी पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं. Here is winter. Winter is very cold. It falls in the month of December and ends in March. December and January are considered as the peak of cold months of the winter season. There is snowfall in some areas. So बच्चे जो विंटर सीजन होता है वो आपका दिसंबर टू मार्च होता है, लेकिन दिसंबर और जनवरी आपका पीक टाइम होता है, एंड इस टाइम में बहुत जगह पे क्या होता है? स्नोफॉल होता है. Here is spring. The spring season in India falls during the months of March, April and May. It comes after a long 3 months of winter season. Temperature is very pleasant during the season and it's look green and colorful everywhere because of the blooming trees and flowers. So बच्चे स्प्रिंग सीजन क्या होता है? आपका मार्च टू मई होता है. ये सीजन बहुत अच्छा होता है, टेम्परेचर आपका नॉर्मल होता है एंड आपका बहुत कलरफुल सीजन होता है क्योंकि हर तरफ आपके फ्लावर्स जो है वो खिल रहे होते हैं, प्लांट्स जो है वो बिल्कुल ग्रीन होते हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीजन. Here is sources of energy, renewable and non-renewable.
Renewable energy sources are those sources that can be replenished or renewed naturally over time. Air, water, wind, solar energy, etc. are all renewable sources. Renewable sources can be easily renewed by nature. That means renewable sources बच्चा क्या होते हैं जो आपकी नेचर उनको रिहील कर देती है. That means वो आपकी नेचर में एज इट इज प्रेजेंट होते हैं, हम यूज करते हैं, वो फिर हो जाते हैं. जैसे आपका एयर है, वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी है. ठीक है. Here is non-renewable sources or non-renewable energy sources are those natural sources that available in limited quantity. These sources cannot be renewed or replenished in short duration. Therefore, they are also known as exhaustible sources. This form of energy can be easily used up, so we should use it carefully and not waste it. Examples: coal, natural gas, petroleum, etc. So, student, आपका जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, दैट मीन्स वो आपकी नेचर उनको बहुत कम टाइम में जो है नहीं आपको उनको रेप्लेनिश नहीं कर सकती है, रिन्यू नहीं कर सकती है, और वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. इसलिए हमें बहुत सोच समझकर उनको यूज करना चाहिए. हियर इज अ पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. You can see this picture and identify the renewable and non-renewable energy. Here is conservation of energy. Energy is very important. We need to conserve energy to preserve our natural resources, to reduce pollution and to create a healthier environment for everyone. We can do this by following these easy steps. So बच्चे, हमें एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो एक प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज हैं. पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए. Here is switch off the fans and lights when not in use. So आपको फैंस और लाइट्स का स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब वो यूज में नहीं है. Television and video games run on power. Turn them off to save on electricity and read a book instead. Take showers instead of baths and try to limit your shower to 5 minutes. Use a bicycle or walk to travel short distance. Use public transport or carpool. This can save a lot of non-renewable energy. Use LED as CFL bulbs as they use less energy. Turn the tap while brushing your teeth and fix dripping tap if any. Open windows on cool evenings and turn off the AC. So these are some things you can do it by yourself. और आप इसको अपने घर में फॉलो कर सकते हैं. जैसे आप फैन और लाइट जब यूज नहीं करते हैं, स्विच ऑफ करें. टीवी नहीं देख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो टीवी को ऑफ करें. एलईडीज का यूज करें. इन कंपैरिजन ऑफ सीएफएल बल्ब्स, एलईडी कम लाइट यूज करती है. आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें. अगर आपको बहुत कम जगह दूरी पे जाना है तो आप बाइसिकल का यूज करें. ओके स्टूडेंट्स. Avoid repeatedly and unnecessary opening refrigerator and freezers. और बहुत बार उसको नहीं खोलना चाहिए अपने रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स को. Plant trees to keep the air fresh and clean. और बहुत ज्यादा आपको ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. Here is we have, check and mate. Fill in the blanks with correct word as we already read about these things, so you can do it by yourself. Here's an activity. In the grid below, color each square according to the following guidelines. If it describes waste of energy, color the square red. If it describes a way of save energy, color the square yellow. So you can do it by yourself. Okay, students? What we learn in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is, the sun is the primary source of the earth's energy. It gives us the heat and light energy. All living beings need this energy to live. Solar energy is used in a number of ways in solar panels, solar cookers, solar geysers and by plants to make food. So बच्चे, सोलर एनर्जी क्या है? अर्थ का प्राइमरी सोर्स है. एंड सन जो है प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे एनर्जी का. सोलर एनर्जी हम यूज करते हैं बहुत सारे तरीकों से, जैसे सोलर पैनल्स में, सोलर कुकर्स में, एक्सेट्रा. द मेन सीजन इन इंडिया आर समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. Energy is available in the form of renewable and non-renewable sources. Air, water, wind, solar energy, etc. are all renewable sources, and coal and petrol are non-renewable sources of energy. So बच्चे, कुछ sources आपके renewable होते हैं और कुछ non-renewable. We need to conserve energy to preserve our natural resources, to reduce pollution and to create a healthier environment for everyone. So हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट. हियर इज कीवर्ड्स. Autotrophs, a living thing that can make its own food. Replenish, fill up again, conserve, protect from destruction. Thank you students. We will meet again in the next chapter.